हेलो एवरीवन। सो आज हम करने जा रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ क्लास 5 EVS चैप्टर 2 दैट इज जर्नी ऑफ अ रिवर. सो लेट गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द गोदावरी रिवर बिगिन? सो गोदावरी रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है? द गोदावरी रिवर बिगिंस एट त्र्यंबकेश्वर इन द वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र. सो ये कहाँ से स्टार्ट होती है? सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर in the western Ghats, Maharashtra. Which is the second longest river in India? So Ganga is the longest river of India and the second longest river in India is Godavari river. What are the tributaries? So it is the small rivers or streams that join a larger river are called tributaries. ठीक है, जो छोटी छोटी नदियां बड़ी सी रिवर को ज्वाइन करती है ना, that is called tributaries. Into which sea does the Godavari river flow? So Godavari river कहाँ end होती है? So it ends in Bay of Bengal. Why is the Godavari called Dakshin Ganga? ना गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं because it flows through the southern India and is considered sacred. ठीक है? What is perennial river? So a river that flows throughout the year, that is known as a perennial river. What is seasonal river? So a river that flows mainly during the rainy season. So इसे हम क्या कहते हैं? Seasonal river. What is delta? So a delta is the land formed where a river divides into many branches before joining the sea. So जब river sea में मिलने वाली होती है, it divided into many branches. उसका speed, river का speed slow down हो जाता है और बहुत सारे small streams में वो divide कर जाती है, ठीक है? And it deposit all its sediments there. So there it create a marshy land, ठीक है? Before the river join the sea, it creates a marshy land that is known as a delta. नेक्स्ट, नेम द मैंग्रोव फॉरेस्ट वेयर द गोदावरी एंड्स. सो ये जब एक मार्शी लैंड क्रिएट कर देती है ना, एंड देयर इन दैट मार्शी लैंड द मैंग्रोव ट्रीज इजली ग्रो. वहाँ इट इज अ सॉल्टी एंड अ मडी लैंड, ठीक है? एंड इन दिस काइंड ऑफ condition the mangrove tree can grow very easily. So here you can find Koringa mangrove forest, ठीक है? So the mangrove forest where the Godavari ends, so it is Koringa mangrove forest. What is a reservoir? Reservoir क्या होता है? So a large water body formed behind a dam to store water. So जब हम डैम बनाते हैं ना, तो बेसिकली हम रिवर वाटर को स्टोर कर रहे होते हैं. So द स्टोरेज टैंक जो बहुत ह्यूज बनाया जाता है, दैट स्टोरेज टैंक टू स्टोर द रिवर वाटर, दैट इज नोन एज अ रिजर्वायर. ठीक है? हाउ लॉन्ग इज द गोदावरी रिवर? सो इट इज about 1465 kilometers. What are the small rivers or streams that join a larger river called? So it is called tributaries. ठीक है? What is a river that flow throughout the year called? So it is called perennial river. ना पूरे साल उस नदी में पानी होता है. So that is known as a perennial river. Which government program helps clean the river Ganga? So it is Namami Gange program. So इस प्रोग्राम के थ्रू हम रिवर गंगा को क्लीन कर रहे हैं, ठीक है? What helps reduce the chances of flood? So how we can reduce the flood? So by planting more trees can help to reduce floods. Why have people built cities near rivers since ancient times? So बहुत पुराने समय से ही लोग cities को river के पास develop करते हैं. Why? Because people build cities near the river because river provide drinking water, fertile land for farming, transport, fishing and water for daily use. So that's the reason that people built cities near the river. Name two tributaries of Godavari. So Manjira, Sabri and Indravati. ठीक है? आप इसमें से कोई दो लिख सकते हो.
नेम द स्टेट्स थ्रू विच द गोदावरी फ्लो, गोदावरी किन स्टेट से फ्लो करती है? सो इट इज महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। ठीक है। Mention any three uses of river water. So river water is used for drinking, irrigation, na, cooking, also washing, industries, electricity generation. Na, many uses are there. Next, name any four occupation that depend on rivers. So it कौन सा ऐसा occupation है जो river पे depend करता है? So it is farming, fishing, boating, tourism. ना, they all depend on river. Next, what is ecotourism? Ecotourism क्या है? So ecotourism means so visiting forest, rivers and mountains to enjoy nature without harming the environment. So ecotourism में हम forest visit करते हैं, rivers visit करते हैं, mountains visit करते हैं. We enjoy the nature, but we should not harm the environment. ठीक है? That is called ecotourism. Why are dams built? Dams क्यों बनाते हैं? So dams are built to store water, पानी को store करने के लिए ना, river water के पानी को store करने के लिए, irrigate fields, produce electricity, supply drinking water. Next, what problems do dams cause? So dams क्या problem create करते हैं? So forest gets submerged, animals lose their habitats, people have to leave their homes. So जब भी डैम बिल्ड करते हैं ना, so it needs a very large area to build the reservoir. ठीक है, so the nearby areas get flooded. ठीक है, so if there is a forest, the forest will get submerged in water. Now animals lose their habitat, and if there are people living, they lose their homes. ठीक है. Why should we not waste water? पानी को हमें क्यों बर्बाद नहीं करना चाहिए? Water is limited and essential for all living beings. पानी तो हमारे पास limited है, right? And it is required by all living beings. Either it's a plant, animal, human being, सभी को पानी चाहिए. Saving water ensures enough water for the future. अगर हम पानी को बचाएंगे, so our future generation will also have sufficient water. How does pollution affect rivers? Pollution कैसे rivers को affect करती है? So pollution makes river water dirty. ना, pollution से river water dirty हो जाता है. It harms fish and other animals, spread diseases and makes water unsafe. So we should not pollute our rivers. How does plastic harm rivers? So plastic कैसे harm करते हैं rivers को? So plastic blocks water flow, pollutes river, harm fish, birds, turtles. ना, next, why can clear looking river water still be unsafe? ना, पानी कभी कभी देखने में तो काफी साफ होता है, but you cannot drink that water because it may contain some harmful chemicals, some germs may be dissolved in the water even though it may look clean. ना, साफ तो दिख रहा होगा but उसमें chemicals होंगे या फिर कोई germs होंगे. So you should not drink water from anywhere. ठीक है. What happens when fertilizers enter rivers? So ये जब fertilizers river में enter करते हैं तो क्या करते हैं? They cause excessive growth of water plants. ठीक है, जो water plants जो होते हैं जो पानी में grow करते हैं, so because of this fertilizer the growth of the water plants increase, forming a green blanket that reduces oxygen and kill fishes. So ये पूरा एक ब्लैंकेट की तरह पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लेते हैं जिससे ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाता है एंड द फिशेस व्हिच आर लिविंग इन द वाटर दे डाई. What is the Namami Gange program? So Namami Gange program क्या है? It is a government program to clean and protect the river Ganga. Give three ways to protect rivers. So river को कैसे protect किया जा सकता है? Do not throw garbage in rivers. ठीक है? Reduce plastic use and save water. Next, describe the journey of Godavari River. So the Godavari River begins at Trimbakeshwar in the western Ghats of Maharashtra.
ठीक है. It starts as a small stream and become wider as tributaries join it. So जब गोदावरी रिवर यहाँ स्टार्ट होती है त्र्यंबकेश्वर से, it is like a very small stream, but it grows wider, ना फैलते चली जाती है, because of the tributaries join it. बहुत सारे tributaries इससे join करती है, so it become bigger and stronger. It flows through Maharashtra, Telangana and Andhra Pradesh before ending in Bay of Bengal through the Kuringa mangrove forest. So ये कहाँ end करती है? In the Bay of Bengal and through the Kuringa mangrove forest. ठीक है? So इस mangrove forest के through it ends in the Bay of Bengal. Next, explain why rivers are important for people. So rivers people के लिए क्यों important है? So the rivers provide drinking water, irrigation for farming, water for industries, transport, fishing and electricity. They also support wildlife and many people's livelihood, right? So बहुत सारे लोगों का जो मेन बिजनेस है ये रिवर पे डिपेंड करता है, like transportation, tourism, fishing, irrigation, right? Next, how does a dam change the life of a river? So, अगर हम river के ऊपर एक dam build करते हैं, so how it change the life of a river? So, a dam stores river water in the reservoir, ना? Dam क्या करता है? नदी के पानी को रिजर्वायर में स्टोर करता है. It helps supply water and generate electricity. So, this stored water can be used for irrigation, for drinking water, for a drinking purpose, to generate electricity, but it also flood forest and villages. Many people and animals lose their homes because of dams. ठीक है, so dams के कुछ good benefits भी हैं, कुछ harmful effects भी हैं. Explain the harmful effects of river pollution. So river pollution kills fish and other aquatic animals, spreads diseases, contaminates drinking water and damages the environment. ठीक है, plastic and chemicals also reduce water quality. So river pollution से क्या होता है, fishes and other aquatic animals मर जाते हैं. They also contaminate the, ये fresh water को contaminate कर देते हैं, ठीक है, and it reduces the water quality. ना, what causes flood? So flood कैसे आता है? So when there is a heavy rainfall, so flood happens when heavy rainfall causes rivers to overflow their banks. जब कभी बहुत तेज बारिश होती है तो river overflow करने लगते हैं and this water just enters into the nearby field, roads, houses. ना ये चारों तरफ फैल जाते हैं and it causes so much of a damage. What problems are caused by flood? So flood के कारण क्या damage होता है? Floods damages house, roads, crops, schools and electricity supply. They also spread diseases and force people and animals to move to a safer places. Okay, next. Write 5 flood safety rules. So move to a higher ground. So जब कभी फ्लड आ जाए तो क्या करना है, मूव टू अ हायर ग्राउंड, फॉलो इवैक्यूएशन ऑर्डर्स, अवॉइड फ्लड वाटर को अवॉइड करना है आपको, स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक वायर्स, कीप एन इमरजेंसी किट रेडी जिसमें आपका कुछ खाने का सामान, कुछ मेडिसिन, ठीक है, यू शुड कीप द इमरजेंसी किट रेडी. व्हाई डू ट्रीज हेल्प प्रिवेंट फ्लड? सो ट्रीज कैसे फ्लड को प्रिवेंट कर सकते हैं? So trees absorbs rainwater and slow down water flow. ठीक है, ये रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि पानी का जो फ्लो है वो कम हो जाए. Their roots hold the soil together and reduce flooding. Okay, so that's the reason we should plant more and more trees. What happens when a rivers run dry? क्या होगा जब नदियाँ सूख जाएंगी? People face water shortages for drinking, cooking, farming. ना, जब नदियाँ सूख जाएंगी तो we will have the shortage of water, पानी की कमी हो जाएगी, will not get enough water for drinking, cooking, farming. Animals also suffer and families may migrate to places where water is available. So क्या होगा कि लोग
वैसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ पे पानी अवेलेबल हो। नेक्स्ट, हाउ कैन वी सेव वाटर एवरी डे? हर दिन हम पानी को कैसे सेव कर सकते? So we should close taps properly, repair leaks, reuse water for plants, avoid wasting drinking water and encourage others to save water. ना, हम ये सारे कुछ करके हम everyday life में पानी को बचा सकते हैं. Next, why is every drop of water important? So पानी का हर बूंद important है. So fresh water is limited. Every drop saved Every drop saved helps people, animals and plants survive in the future. तो fresh water तो limited है. So every drop we save will help to survive the people, animal and plants in the future. Why are mangrove forest important? Mangrove forest important क्यों है? The mangrove forest protect the coastline, prevent soil erosion and provide shelter to many birds, fish and animals. ठीक है? Why do fish and birds disappear from polluted river? ना polluted river में आप कोई भी fish या birds या कोई भी animals आप नहीं देख पाओगे वहाँ. So pollution destroys their food and habitat, making it difficult for them to survive. Next, what would happen if there were no rivers? क्या होगा जब कोई rivers नहीं होगा तो? There would be a shortage of drinking water. ना अगर river ही नहीं होगा तो we'll not get fresh water to drink. Farming would suffer. ना crops grow करने के लिए भी fresh water चाहिए. So farming would suffer. Wildlife will decline. Wildlife animals को भी fresh water चाहिए होता है. They get the fresh water from the rivers. So the wildlife will decline and many people will lose their livelihood. ना survive करना ही मुश्किल हो जाएगा. The plants will die, animals will die, and the humans will also not survive. Why should industries treat wastewater before releasing it? So industry से बहुत सारा जो waste release होता है ना, it is treated. Treated means we remove the pollution. We remove all the chemicals and we make this dirty water clean before releasing it in the river और वाटर बॉडीज. जब कभी इंडस्ट्री से जब वेस्ट वाटर आता है ना, इट इज ट्रीटेड, इट इज रिमूव ऑल द केमिकल्स, ऑल द इम्प्योरिटीज जो भी प्रेजेंट होता है ना, उसको रिमूव करने के बाद ही रिवर में डिस्चार्ज किया जाता है पानी को. सो ट्रीटेड वाटर प्रिवेंट्स पॉल्यूशन. सो अगर हम ऐसा करते हैं ना तो पॉल्यूशन, वाटर बॉडीज पॉल्यूट नहीं होगी. इट विल प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड कीप्स रिवर सेफ फॉर ह्यूमन यूज. और उस पानी को सभी लोग यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, इफ यू वर अ विलेज लीडर हाउ वुड यू प्रोटेक्ट द रिवर? अगर आप विलेज के एक लीडर होते तो आप कैसे रिवर को प्रोटेक्ट करते? I would stop dumping waste, no? Plant trees, organize clean river cleaning drives, spread awareness and ensure wastewater is treated. So हम ये सब कुछ कर सकते हैं ना? Why should we reduce the use of a plastic near rivers? So plastic pollutes water, harms animals, block water flow and takes many years to decompose. Now we should try to avoid the use of the plastic, okay, because the plastics are the main problem of pollution. Okay. How are rivers connected to forest? So river forest से कैसे connected है? So forest help maintain river flow by absorbing rainwater, preventing soil erosion and reducing floods. ठीक है? So forest कैसे help करती river को? It help to absorb the excess of rainwater, prevent the soil erosion, right? And it reduces the flood. Why do people celebrate river festival? ना हमारे यहाँ बहुत सारे river festivals हैं and we celebrate that. So many rivers are considered sacred and are important part of Indian culture and tradition. So बहुत सारे river like a river Ganga, river Brahmaputra, they all are considered sacred and are important part of our Indian culture and tradition.
How do canals help farmer? Canals क्या होता है? So there are many areas ना, बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं where there is no river, वहाँ river नहीं होता है, and they also do not have a big pond or a lake, वैसा कुछ नहीं होता है. So how the people will get the water for farming के लिए उन्हें पानी चाहिए. So what we do is that we connect a small stream ना, रिवर का एक पार्ट हम कट करके उस एरिया में जोड़ देते हैं. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड अ कैनल. सो कैनल क्या करता है? इट विल कैरी द रिवर वाटर टू द फार्म्स. ठीक है. रिवर वाटर को फार्म्स तक ले जाता है एंड दैट इज नोन एज अ कैनल. ठीक है. सो कैनल्स कैरी रिवर वाटर टू फार्म्स, हेल्पिंग फार्मर्स इरिगेट क्रॉप्स इवन ड्यूरिंग ड्राई सीजन. ठीक है. So that's it for today. So hope you have enjoyed the class. अगर वीडियो अच्छा लगा हो, so please like the video, subscribe to the channel. See you in the next class. Till then, bye. Take care.